Today we will came to know how to draw a tangent at a point. This topic is known as approximation. Or limit. We will start from our previous knowledge. This one is the curve. What is the equation of this curve? X square. Y is equal to x squared. This one is the point. Three comma 9. Take another point which is close to this one, and this point is 3.1 comma 9.61. A line joining these 2 points. Line joining these 2 points is known as secant line. Now we will draw a table. Let the first point be x1 y1, that is 3 9. We have x1 as 3. We have x2 as 3.1. x2 minus x1 is 0.1. The difference in the values of y is 0.1. We have y1 as 9 and y2 as 9.61. y2 minus y1 is 0.61. y2 minus y1 over x2 minus x1 is 6.1. Now we will move this point close to 3 9. Now the new point is 3.01. 3.01. The value of y is 9.0601, and the new secant line is this. Now सर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? ये बेटा कोई एक पॉइंट मैंने सपोज किया है. Actually I want to draw a tangent line at 3 9. Now what should be the method to draw the tangent line?
we will select any point close to 39, which is 31 and 9.61, very close to this one, 3.1 and 9.61. Now we will move this point 31 close to 39. First the point was 3.1, 9.61. Now we have selected a closer point 3.01 and 9.061. Is this one closer to the previous one? जी आबिर, जी सर, क्लोजर है। सर when ये दूसरा लाइन भी वो पॉइंट भी लाइन के ऊपर है या फिर सर्कल के ऊपर है? बेटा कर्व के ऊपर है, point ओके 3.01 सर। lies on the curve. When we will move the variable point very close to the fixed point 39, the secant line will become the tangent line. The secant line will become the tangent line. इस तरह होगा या नहीं होगा? जी आबिर, सर समझ नहीं आया। बेटा देखें कि जब the variable point will be very close to the 39, very close to 39, that is at this point, at this place. Now what is the difference between P and Q? Very small difference. Then the secant line is the tangent line, and the gradient of the secant line is the gradient of the tangent line. जब point जो वेरिएबल पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट 39 के जब बहुत करीब चला जाएगा तो फिर क्या होगा, जो हमारी secant लाइन है विल बी द टेंजेंट लाइन। दोबारा बताऊं, नहीं सर, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि टेंजेंट लाइन असल में बनती कैसे है, उसका ग्रेडियंट कैसे बनता है। अब इन द नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अंदर x1 is 3, x2 is 3.01, x2 minus x1 is 0.01, y1 is 9, this y2 is 9.0601, y2 minus 1 is 0.0601, and y2 minus y1 over x2 minus 1 is 6.01. Now we will shift this point more closer to the fixed point PQ. Now let the point be 3.001, comma, the value of y will be 9.006001. The new line is this. Now x1 is 3, x2 is 3.001, x2 minus x1 is 0.001, y1 is 9, y2 is 9.006001, and the y2 minus 1 is 0.006001, and the gradient of this green line is 6.001. Now Abir, what can you predict about the gradient of the tangent line? Abir, the gradient of the secant line, the first secant line is 6.1, the second secant line is 6.01, the third secant line is 6.001. What can you predict about the gradient of the tangent line? Umar? यस सर, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन डिक्रीज होता जा रहा है। And it is
closer to, more the closer to tangent line. tangent line, and what is the predicted gradient of the tangent line? So less than 6.001. Closer to 6, more closer to 6. Okay, sir. And we will predict that the gradient of the tangent line is 6. Now I will move this point more close to the point P. That is the fixed point. Now 3.0001, 9.0006, 0001. The x1 is 3, 3.0001, 0.0001. The difference in the values of y is 0.0001, 9, 9.0006, 0001, 0.0006, 0001, 0. When I will further move the variable point close to the point 3, then the gradient will be more closer to 6. So the gradient of the tangent line is, tangent line is 6. जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो बोलें जी. Now we will verify this one with the help of differentiation. Here we have y is equal to x square, dy over dx is equal to 2x, and dy over dx, x is equal to 3 is equal to 2 into 3 is 6. Is this one verified? जी बच्चों. Clear. दानिया बेटा, आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है. Now we will write down this one. dy by dx is equal to, name the y2 minus y1 as del y. Del y mean change in y. Over x2 minus x1 as del x. Now del y over del x, that is the gradient of the secant line, is approximately equal to the tangent line when del x is very small. When del x is very small. This one is the concept of limit. जब हम किसी चीज को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर हम उसकी अप्रोक्सीमेशंस ले लेते हैं कि दिस वन इज द लिमिट ऑफ दिस ग्रेडियंट, दैट द ग्रेडियंट कैन नॉट क्रॉस 6 at this point. dy over dx is approximately equal to del y over del x when del x is very small. Now you can see that in this case the del x is, in the last case, yellow case, the del x change in x is 0.001. अब आप मुझे ये बात बताएं कि gradient of the tangent line and gradient of the 3, 9 and the yellow point is approximately equal or not? जी आबिर.
जी सर इक्वल है। ठीक है, we can also define this limiting concept that dy by dx is equal to one value of x is h, the other value of x is x minus h. Now the value of y at x is f of x minus the value of y at x minus h is f of x minus h. If the difference between the values of x is small, जी बताएं जी, values of x में difference क्या है, कौन बताएगा? सर यहाँ पे एज क्या है? आप मुझे ये बात बताएं, फाहद है ना कि दानियाल? ये क्वेश्चन किसने पूछा था बेटा? सर मैं इर्तजा। इर्तजा, what is the difference between the values of x? तो कौन सी वाली लाइन में? बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, एक x की वैल्यू मैंने x ली है और दूसरी x माइनस एच ली है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर 0.001। नहीं बेटा, अगर एक x है एक x माइनस एच है तो डिफरेंस क्या होगा? x2 माइनस x1, x माइनस एच, डिफरेंस हो जाएगा h। वन पॉइंट ठीक है इज, सर। देखिए बेटा, एक पॉइंट है xy, एक पॉइंट है xy, दूसरा पॉइंट क्या है? x माइनस एच, और y क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस एच। तो x की वैल्यूज में डिफरेंस क्या है? x माइनस एच। जी, h आ गया ना। अगर ये x की वैल्यूज में डिफरेंस स्मॉल हो जाता है तो फिर ये जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है, इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट के। टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। If the difference between the values of x is very small, if the difference between the values of x is very small, h tends to 0, then the gradient of the 2 points, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, y2 minus y1 over x2 minus x1 is approximately equal to dy by dx. अब इसमें से क्या पूछना है पूछे? सर ये 9 में से क्या माइनस कर रहे थे ऊपर y2 के अंदर, वो नहीं समझे। अच्छा बेटा, अगर वैल्यू x की x है तो y की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x। अगर x यस की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 3। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 4। इफ द वैल्यू ऑफ x is x, then the value of y is f of x. If the value of x is x minus h, then the value of y is f of x minus h. यस सर। सर वो समझ आ गई, मुझे ये नहीं समझ आई यहाँ एच की वैल्यू क्या डिनोट कर रही है। x h की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x डिनोट कर रही सर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अप्लाई करें तो एच की वैल्यू क्या आएगी? है। ये h ये है, ये x ओके की सर। दो वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस डेल x है। ओके सर। अब ये देखें कि अगर x की, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x इज स्मॉल, देन द gradient of the secant line is equal to the gradient of the tangent line. But the condition is the difference between the values of x should be small. So I will sum up like this. If
the difference between the values of x is small, then the gradient of the secant line is the gradient of the tangent line. ठीक है, ये बात क्लियर हुई डायग्राम से कि नहीं हुई कि द ग्रेडियंट ऑफ द secant line is the gradient of the tangent line when x becomes, the change in x becomes very small. जी बताएं जी, अगर नहीं समझ Yes, आई sir. तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. Now I will please open the file which is with the name circle limit. Please, all of you, please open the file. File of limit. Can you see the file on the screen? Can you all see the file on the screen? Yes, जी sir. जी सर आ रही है. Okay. The points, following points: A is 0, 1, B is 1, 6, C is 1.57.775, D is 1.9, E is 2. The point E is the fixed one. The point E is the fixed one, and we are moving from 0 towards 2. Is this clear? The fixed Yes, point sir. is 2, 1, and we are moving from 0 towards 2, from left towards right. Now the gradient of the secant line AE is 4. Gradient of the secant line BE is 3. That is B and E. Now gradient of the secant line CE is gradient of CE is, find out the gradient. जी बेटा 2.5 2.5, 9.879 divided by 2 minus 1.9. 2 points, 2 point. जी फाहद 2.5 है. सीई का 2.5 है. आप डीई का sorry, this one is the DE, okay, and the M of CE is 9 minus 7.75 divided by 2 minus 1.5. This one is 2.5, and what is the gradient of DE? 2.1. Sorry, 2.1. 2.1. Now the gradient of AE is 4, the gradient of BE is 3, the gradient of, we are moving closer to the point E. CE is 2, CE is 2.5, the gradient of DE is 2.1. Now, what can you predict about the gradient of the tangent line at E? Sir, 2. 2. Simple. Is there any confusion?
No, sir. So the next part is फहद इसकी पिक्चर खींच के ना अटेंडेंस की वो जरा मुझे सेंड कर देना. The next part is find the value of f dash 2. F dash 2. Find the value of f dash 2. Now what is f dash? F dash is the gradient of the function when x is equal to 2. F dash 2 is the gradient of the tangent line when x is equal to 2. और वो आपने प्रिडिक्ट उमर ने कर लिया है, वो 2 है. बस ये था क्वेश्चन इसमें. अब इसमें से कुछ एक्सप्लेन करूं या हम आगे अगले पार्ट की तरफ मूव करें? सर ये एफ डैश का बता दें, ये क्या वो f dash is the gradient f dash x. f dash सर ये हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट होता है एफ डैश का मतलब? नहीं नहीं नहीं, f dash means derivative with respect to x. f dash 2 means d over dx f of x when x is equal to 2. ओके सर. Now the next question is also very simple. The next question is the equation of the curve is y is equal to x minus 3 under root x plus 1 plus 3. The following are the points lie on the curve. Non-exact values are rounded to 4 dp. Find the value of k. Find the value of k. Now we will put x is equal to 2 into the equation of the curve and get the value of k. जी फहद, क्या वैल्यू है? y is equal to जी फहद बेटा, जी रिस्पॉन्ड सर करें. 1.28 1.28 1.28 आ रही है, ठीक है 1.28. अब ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AE correct to 4 dp. Find the gradient of AE. जी सर m of ऊपर वाली 1.27 आ रही है, वो ठीक है गलत है. 1.27. Find the gradient of AE. 3 minus 1.27 over 3 minus 2. G, the final answer is 1.73. 1.73 is the gradient of AE. Now look at all the points. Point 33 is the fixed one. The point A has the x coordinate 2, B has 2.9, C has 2.99, D has 2.9999. We are moving closer to the point E from left towards right. सर उसने 4 डेसिमल प्लेसेस बोला था, ये पार्ट में 4 डेसिमल प्लेसेस जी जी लिखेंगे 4 डेसिमल में बताएंगे. तो Okay. आप इसका बता दें सर y की वैल्यू 1.2679 1.2679. y is equal to 1.2679. So the gradient बताएं 4 significant में क्या बनेगा? तो 3 to 1 हो जाएगा. दोबारा जरा पूरी वैल्यू बताएं बेटा. 1.7321. 7321. This one is the value of the gradient. अब अगले पार्ट के अंदर वो कह रहा है द ग्रेडियंट्स ऑफ BC, BE, CE, DE rounded to 4 dp are 1.9478, 1.9975, 1.9997. State giving a reason of your answer. What the values of 4 gradients suggest about the gradient of the point at E?
when we are moving close to the point E from left towards right, the gradients of the secant line are 1.97, 1.99, 1.99. So what is the value of the gradient at point E? What is the value of the gradient of the tangent line at point E? 2 बिल्कुल सही. The gradient of the tangent line at E is 2. The gradient of the curve at 2 is at 3 is 2. Is there any confusion? The gradient of curve at E is 2 because the gradient of the secant lines from AE to DE are approaching to 2. This one is